which is not all spice. This spice which has a mixture of three plants: cinnamon, lavang, and elaichi. It has fragrance of that, and it can be used to cure many diseases. You can smell this, and you can use this in your vegetables. That was actually Costas Pictus. Smell this. It is allspice. Does anyone know it? Masala Does anyone pan. know about it? Masala pan. Yes. It is a mixture of plants. Elaichi. Yes. It has many properties. It can cure gastrointestinal problems, ulcers, headache. It can strong your immunity and all the things. So it can grow in your backyard, and it is a small shrub. So you can use it in your daily food for cooking, and it will keep your stomach related problems very nice. And your immunity is very strong, so you will not need anything like medicines to cure it. Then the other pan is makai pan. You may be knowing makai pan. Not that fire pan, chocolate pan, not that. Makai pan is a pan which has a more gingery taste, and it is climber. It can grow on walls, you can grow in your backyard, anywhere. So that makai pan is this. It is a climber. It can grow to 4 meter long, and it is native to Western Ghats, and it only grows in Western Ghats all over the world. So have a taste. So it gives a quick relief to your toothache. मतलब अगर आपका दर्द कर रहा है दांत, तो तुम उसे खा लो, तुम्हारा दांत अच्छा हो जाएगा. फिर तुम अगर तुम्हें चिकन खाने की आदत है तो कुछ फ्रेग्रेंस से, तो उसकी जगह पे ये खाओ, ये तुम्हारा माउथ फ्रेशनर करके यूज़ कर रहा है. मतलब तुम नॉर्मल जो चिंगम होता है उसको तुम रिप्लेस कर सकते हो इससे. खा के देखो. फिर ओवा पान. अभी आपको पता रहेगा ओवा आपके घर पे उगता रहेगा. मीन्स ओवा मतलब कि स्मॉल डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें मैंने खाने देती होगी खाने के बाद. That helps in digestion. And the thing I am going to tell you, it's not ova, because ova is not grown in India. It is imported from the other countries. This ova pan, which smells like ova, and it has the qualities ova, but it will never produce ova in its lifetime. So this is a pure native plant. So you can smell it. So yes, yes. Right. It is used in Brazil, in India, but many of you may not know it. Yes, it will never produce ova because it is not a plant. It is grown only in Western Ghats and only in India, and it does not grow in this. And the ova we eat, it is imported from the other countries. It don't grow in India. This is ova pan. Yes, pan has a very important. And the last thing you must have heard, chandan. It is used in religious ornaments. Yes, so you can chandan. Have you ever seen chandan? Yes. Means what chandan you have? You seen a chandan tree or a bar or the trees? Tree. Can you identify chandan over here? The first one. Which one? Right? Yes. No, wrong. See your. Where do you see it? Next. No, no. This is sandalwood. It is a parasitic plant. It depends on the other plants for its nitrogen. So you have to grow other nitrogen producing plant for it. So I have planted a leaf for it. All must you know the importance of sandalwood. Sandalwood can cure almost everything तो दूसरा मसाला because it means तिखट लागेल. if in our body there is excess heat, it can neutralize it, but it has very slow growth. 150 years to it grows, so good a long time to grow. So at the better part you can grow in your garden. Then is Agni Mantha.
who has problems related to heat in our body, how you neutralize it? I eat lot of sugar. इस गर्मी की फोड़ी आती है बहुत लोगों को, होता है। हाँ, तो वो एक प्लांट है अग्निमंथा करके, तो उसे आप यूज़ करोगे अग्निमंथा। सो उसकी जो पेरीज होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उसको हीट रिड्यूस होती है। तो अग्निमंथा मतलब कि ये, तो इसके ऊपर जो आपको दिख रहे हैं फ्लावर्स और पेरीज, इसका ये पार्ट का काढ़ा बनाया जाता है। काढ़ा पता है ना सबको? तो काढ़ा बना के उसको हीट रिड्यूस करने के लिए, जो एक्सेस हीट हो तो एक अलग तुरंत इफेक्टिव है। सो ये अग्निमंथा है। इसकी हाइट करीबन 1 से 2 मीटर, ज़्यादा नहीं। देन इलायची, आई शो यू इलायची प्लांट। हैव यू एवर सीन इलायची? इलायची, does anyone know इलायची? You eat? Yes. So where does इलायची grow? In Kerala. But इलायची is grown in Western Ghats, so we are in Western Ghats deciduous. So we can grow इलायची too. The plant of इलायची is this. It will give me इलायची after 3 years. And yes. But it will get इलायची, no? I will get इलायची, so I will keep it. इलायची can lower blood pressure, relieve asthma, cold, fevers, gastrointestinal problems, increase your hair growth, make your hair strong and more shiny. So you can use this. It is easily available in any of the nurseries. And you know lemongrass, gauti chaha. Yes, you can use. Yes, the tea is slow poison, so you can replace gauti cha with it. It will not provide you no side effects. It's very healthy, improve your immune system, and it can be. It is a wild plant. It grows anywhere, and it is easily available. It has fragrance, nice. Can what is it fragrance? No, we are family. Look. And it will not grow. What? Because it is a wild plant. All the medicinal plants in the world are wild plants which we use. And the allopathic plants are derived from the bacteria. And it can, means I am the live example for it. I don't take any allopathic medicine. I don't use soap, nothing. I just use all these plants and cure it. What difference? There is a plant which provides you soap, and you can use that like soap. Don't use soap outside. That plant's name is only soap. It is an Indian plant used by tribal people. So, any questions? You did very well. You said that you are growing sandalwood, but actually I think sandalwood is not allowed legally. You need a legal permission to grow sandalwood. No, it is a religious plant, so you can keep it. And if you means कभी देख अगर तूने उसका कुछ गलत इस्तेमाल किया तो तेरे को केस होता है, तुझे 3 महीने की जेल होती है उसके। नहीं वो सब ठीक है, लेकिन एक केस हुआ था कि एक बहुत पुणे के केस है कि बहुत सैंडलवुड के बहुत सारे प्लांट्स अपने आप ग्रो गए थे वहाँ पे, तो फिर उस पर केस चली थी, लेकिन बाद में वो छूट गए क्योंकि एविडेंसेस नहीं थे सपोर्ट। इसलिए कुछ मेरे को इसके बारे में पता नहीं कि मैंने इतना ऐसा होता है कि सैंडलवुड चोरी हुआ है, मेरे घर से भी चोरी हो चुका है, लोग रात को आते तोड़ के चले जाते हैं। तो वो ऐसा होता है। एनी मोर क्वेश्चंस? या आपको कोई प्रॉब्लम होगा मैं उसको क्योर कर पाऊँ? Do you know something about the plant Nothapodites pneumoniana? It actually helps to cure cancer. Yes. One more plant is that Gloriosa superba, curled Yes. It grows in rainy season and becomes dead in rainy season. It is a tuber, and that seeds can cure cancer. But it is very rare plant, so you will not get in your plant. The plant which I mentioned, it is found in Kolhapur. So can it grow here? I don't know about that, but Kolhapur's temperature and all this is different, so it will not grow here. Any more doubts? Would you share if I want to cultivate an apple tree over here? Yes. So what procedure will I have to You follow? must first have to acclimatize it. How? If you want to grow apple tree, you have to buy it from Jammu Kashmir, that area. Plant it somewhere near that state. After 2-3 years, take that plant and keep it in Rajasthan. And after 2-3 years, take that plant and transfer it 1 or 2 states ahead. मतलब कि उसको धीरे धीरे उठाने का आगे. So you will take 10 years to bring it in the manage, but it will grow.
and it will produce, but it will not produce one kg, it will produce only banana. That is the problem, so we don't do it. Yes. No, Rita is not. Rita is different. It is used mainly for that Tripura churna. Shika का ये. Yes, Rita is for hair. Yes, Peda, yes. Peda and Peda. This is Peda. Yes. So plant is different. It is a climber plant. Only found in jungles. But if you want herbal plant, you can bring that jungle at your backyard. I will tell you a nursery. You can go over there and you will get all the medicine plants, especially medicine. You were talking about that soap plant. It is used for both soap and for washing clothes. So that soap plant means it is a climber. It produces flowers which are used as a soap. I actually don't know the name right now. I will let you know. And that jhadu which we use at home, long ones. From what it would be, उसमें वो किसमें से बना रहेगा? झाड़ू जो होता है साफ करने का, वो किसमें से बनता है वो जो? Yes. Another एक फूल एक प्लांट होता है वो भी क्लाइंबर है. जनरली जो मेडिसिनल प्लांट्स जो तुम्हें बेनिफिट करते हैं वो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं और क्लाइंबर्स होते हैं. तो बहुत सारे प्लांट्स भी क्लाइंबर्स हैं. तो जिसकी पाइपर नहीं करना मतलब कि अभी ये मेरी का पेट है तो इसके ऊपर मेरी देगी मेरे को फिर मगई मार तो ये सब वाइट होता है. तो आपने जब भी जो मैं झाड़ू का बोल रहा हूँ एक प्लांट है जिसके काफ़ी बड़े फूल आते हैं उसकी फूल की कलेक्शन बनाए तो एक झाड़ू बनता है. तो अपने को जो मार्केट में मिलता है वो जो झाड़ू होता है वो प्लांट है. आखिर जो तुम बोल रहे हो कोकोनट के होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. जो जनरली वाइट स्किन थे वो प्लांट्स होते हैं क्योंकि वो ईजी है ग्रो करना. कोई भी ग्रो करता है और जो फार्मर्स होते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है उसका. ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं. कोई और किसको दिक्कत है, कोई डाउट्स या फिर तो कोई प्रॉब्लम आता है? या आँखें नहीं आँखें ठीक करने की इसको जिसकी सपोर्ट है तुम कैरेट्स वो सब खाओ उसके भी रिलीज करने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं. मेमोरी इंक्रीज करके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं. देख तू जो भी प्लांट करेगा वो तेरे को बेनिफिट करेगा. मेडिसिनल प्लांट मतलब दुनिया में जितने भी प्लांट सब मेडिसिन और उसका यूज़ कोई करता है क्या करें. तो तेरे को तेरी मेमोरी तू खुद से सोच ले कि मुझे अच्छा करना है तो कर लेगा अच्छा. और देखो नीम usually. मॉस्किटो रिपेलेंट अरे वेंडी होते हैं. मॉस्किटो रिपेलेंट प्लांट हाँ राइट सिट्रोन नहीं मैंने मुझे नहीं ज़रूरत उसकी. जैसे जैसे अभी देखो तुम इंजेक्शन लेते हो डॉक्टर के पास जाके कोई भी चीज़ प्रॉब्लम हुई तो इंजेक्शन लेते हैं. उसका एक रिप्लेस कर सकते हो कि जो हनी बी रेस्टिंग प्लांट्स होते हैं वो तुम्हारे घर के इधर को तुम्हें अगर हनी बी का स्टिंग मिला सो वो स्टिंग इतना पावरफुल होता है कि वो तुम्हें 3 दिन तक कुछ भी होने नहीं देता या कुछ भी हुआ रहता है तो उसको क्योर करता है. तो एक रिसर्च पेपर है जिसमें उसने हार्ट अटैक क्योर किया था एपिस्टॉल से प्रॉपरली. सो बी स्टिंग तुम यूज़ करके कोई प्लांट्स जो बी रेस्टिंग होते हैं उनको रखने का वो तुम्हें स्टिंग देगा उससे तुम्हें हेल्प अच्छी होगी तो उससे हो सकता है. इसका और कोई डाउट बोल. तुमने बताया कि अभी ये अभी ये सारी चीज़ें हमें सुन गई हमें खाने के लिए दिया तो ये सब प्लांट क्यों प्रोड्यूस करता है उसको तो कोई ज़रूरत है. डिफेंसेस उसके लिए जिससे कि वो कीड़े और वो सब उसे दूर रखे से बन जाए उससे क्योंकि मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर कभी चींटी नहीं लगती. अभी मैंने इतने प्लांट्स लाए इसमें से चींटियाँ लगने वाले प्लांट्स होते हैं अश्वगंधा क्योंकि वो फ्लावर रहता है उसके अंदर नेक्टर होता है. कुछ चींटी को उसके ऊपर कुछ मिलता है इसलिए उधर आते हैं. अभी ये प्लांट इसमें भी फ्लावर है इसमें भी चींटी वो सब आते हैं पैरासाइट्स आते हैं इसलिए इसको केयर ज़्यादा लेनी पड़ती है. इलायची पे एक भी कीड़ा कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि वो स्पाइस है उसकी वो प्रॉपर्टी वो एंड्स को सबको दूर रखता है. फिर सैंडलवुड कुछ नहीं प्रॉब्लम है. इंसुलिन प्लांट उसमें कभी कीड़े नहीं आते सो मुझे टेंशन नहीं रहता उसका. और फिर क्लाइंबर्स का कोई टेंशन नहीं उसके ऊपर कीड़े आए नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता. एनी मोर क्वेश्चंस? Very good.